countless women who have made a difference. बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड ने अनोखे अंदाज में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। महिलाओं की सेहत, महिलाओं की ताकत, कुव्वत और अहमियत को उजागर करने की खूबसूरत पहल यहां देखने को मिली। इस स्टेज पर मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हुए दूसरों की जान बचाई। किसी ने अपने शौहर को किडनी डोनेट किया, तो किसी ने अपने बच्चे को लिवर डोनेट किया, तो कोई कैंसर जैसी बीमारी को शिकस्त देकर खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसी बहादुर महिलाओं को ताज पहनाते हुए मणिपाल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड ने इनका सम्मान किया। इस मौके पर मणिपाल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड के कंसल्टेंट्स डॉक्टर राजशेखर, डॉक्टर संजीव रोहटगी, डॉक्टर भरत सरकार, डॉक्टर रवि शंकर, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर अरुणिमा हालदार, डॉक्टर तस्नीम शाह ने वुमेन्स डे की मुबारकबाद देते हुए महिलाओं की सेहत व तंदुरुस्ती के सिलसिले में कई अहम बातें कहीं, कई अहम सुझाव दिए। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। I am Dr. Rajshekhar Sijaka, consultant surgical oncologist and robotic surgeon. The message I want to give today, आज मैं मैसेज जो देना चाहता हूँ, women are the backbone of every family or our country, because we know that they are very dynamic and handle everything in life. But unfortunately what has happened, they don't come out with their problems. Cancer is such a dreaded disease. If you don't come at the right time, then it will take away their life. And if one single woman is affected in a family, then whole family is affected. So, and luckily breast cancer or ovarian cancer or cervical cancer, women don't want to tell that they are suffering from this one. Shyness ज़्यादा है. They feel shy that I don't want to tell it to anyone in the family. That they have to come out. They have to come out of this shyness, because everything, even if it is a cancer, it is a health problem which can be solved. Now cancers are curable. Instead of losing 90,000 lives per year, 90,000 lives we are losing in India every year for cervical cancer, and every 8 minutes one woman is dying of breast cancer in India. So when this is the alarming incidence, so if they come in early stage, definitely we can cure. One thing. One more thing is, there is a screening method only for women cancers. Actually males don't have any screening, standard screening internationally accepted, मगर वुमेन के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम है, और सर्वाइकल कैंसर जो यूट्राइन का टिप कैंसर होता है उसके लिए वी हैव पैप स्मीयर एंड HPV टेस्टिंग. एंड वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी हैव अ HPV वैक्सीन which will prevent cervical cancer. Before 15 years, 9 to 15 years girl को 2 dose, and 15 to 45 years 3 doses of vaccine if we give, then we can prevent cervical cancer. So 2 most common cancer in a woman we can detect early, cure, or we can prevent with a vaccine. So I urge all the women to come out, take vaccine, or come out when they have symptoms, and we can cure them. So we can have a healthy India. Thank you. लेडीज़ हेल्थी है तो होल फैमिली हेल्थी रहेंगे. सो एवरी ईयर 40 ईयर्स के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है, लाइक स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड इज़ अ मस्ट. फिर ब्रेस्ट कैंसर रूल आउट करने के लिए मैमोग्राम करना है, सर्वाइकल कैंसर रूल करने के लिए सब पैप स्मीयर रखना है, और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब करना है. सो एवरी ईयर एक करने के बाद इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, डरने का बात नहीं है, यू विल बी हेल्थी. तो तकलीफ़ें हैं, मसले हैं, तो कैसे डील कर सकते हैं? यूजली 40 ईयर्स के बाद मोस्ट ज़्यादा से लेडीज़ को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होते हैं. सो ब्लीडिंग रहने से
हम वो क्या क्या रीज़न, अलग अलग रीज़न से ब्लीडिंग हो सकते हैं, फाइब्रॉइड के वजह से, पॉलिप के वजह से, एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम के वजह से हो सकते हैं, कैंसर के वजह से भी हो सकते हैं. सो हम वो रूल आउट करना है, तो हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे एंड मेडिकल मैनेजमेंट दवाई से ट्रीट कर सके तो पहले दवाई से ट्रीट करेंगे. वो नहीं हुआ, वो सक्सेस नहीं हुआ तो ही हम सर्जरी करते हैं. तो अवेयरनेस की कमी भी देखने को मिलती है खासतौर पर खवातीन की जब हम बात अवेयरनेस, कैंसर सब अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट. सो अवेयरनेस कम रहने से वुमन अब वाइट डिस्चार्ज है, क्या प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, तो वी दे जस्ट डिले कमिंग टू अ डॉक्टर. सो इस कुछ प्रॉब्लम रहने से फर्स्ट यू हैव टू मीट द डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है. उसके बाद वी विल सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन. योर गुड नेम? आई एम डॉक्टर तस्नीम फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड, गायनेकोलॉजिस्ट. वुमेन पेशेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? सो लेडीज़ के जो स्पाइन या फिर बोन्स होते हैं उसको हमको कंसिडर करना चाहिए कि ये एक बोन बैंक है. तो जितना हम बचपन में और थोड़ा सा जैसे 15-16 साल 20 साल तक की उम्र में इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे किसी भी बैंक में डिपॉजिट करना ज़रूरी होता है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट में रिटर्न्स अच्छे आने चाहिए या फिर रिटायरमेंट लाइफ ठीक होना चाहिए. उसी की तरह लेडीज़ के जो बोन्स होते हैं उसको बैंक की तरह ट्रीट करना चाहिए. अच्छा डाइट, लेडीज़ को सन एक्सपोजर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी इंटेक, और इम्पॉर्टेंट है डाइट, बहुत इम्पॉर्टेंट है. डाइट में सी फूड, फिश, एग्स, वेजिटेरियंस के लिए स्प्राउट्स, ये खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब वो मेनोपॉज होगा, जब पीरियड्स बंद होते हैं, उसके बाद में इंडियन लेडीज़ के बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं. तो उस समय में अच्छा बैंक बैलेंस या फिर बोन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फर्दर फ्यूचर एज में प्रॉब्लम ना हो, ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना हो. तो उसके लिए क्या करना चाहिए बोन्स की मजबूती? बोन्स मजबूती के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट. इंडियन डाइट अच्छा नहीं है. बैलेंस डाइट में हम लोग मसाले और चटर पटर चीज़ें ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन. हमें नॉन वेजिटेरियन फूड एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का. सभी तरह के कैल्शियम विटामिन के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड एक बहुत अच्छा सोर्स है, स्पेशली फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन, कैल्शियम विच आर रिक्वायर्ड. वेजिटेरियंस लोगों के लिए स्प्राउट्स और फ्रेश फ्रूट्स जो कि लोकली अवेलेबल हैं, कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स खाने का ज़रूरत नहीं है. स्ट्रॉबेरीज़ और ड्रैगन फ्रूट ये सब खाने का ज़रूरत नहीं है. हमको जो सीजनली जो लोकली केला है और अमरूद हैं, ये सब खाना ज़्यादा बेहतर है. आम है, जो लोकली अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो सब खा के. एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली लेडीज़ जो घर में रहती हैं, दे आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट. सनलाइट में, धूप में जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि विटामिन डी जो होता है वो स्किन में सिंथेसाइज हो जाता है. तो स्किन को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है सनलाइट को. अपनी इंडियन लेडीज़ घर में बैठी रहती हैं, तो उनको धूप में निकलना, मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है. कॉर्पोरेट लेडीज़ में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बोन्स वीक होंगी ही होंगी. आई एम डॉक्टर भरत सरकार. मैं आई एम अ कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन. मतलब कमर दर्द और गर्दन दर्द, इन सब का ऑपरेशन करते हैं. On the occasion of Women's Day. Yeah, so generally the women are more courageous, and then they take care of the family. And then when somebody is fallen ill in their family, so the first they will come forward to see that if it is husband, they will say that I take care of my husband, and then my family will be good. And also they will be taking care of the children also. So despite of that, most of the times even they have difficulties, but they are the ones, they just come forward and then take care of the family. As I said that it is not necessarily husband, but even for the children. So the women are the one first will come forward that I will donate my kidney and then save my child. So this is the usually happens most of the parts of the India. And then generally we see this trend of women coming forward more often than men, donating their kidneys to their children or the husband. So we are happy that we are lucky to have women in our lives, so that we get the benefit from the women,
and then we all live together after a successful transplantation. Especially the family gets lots of benefits of kidney transplantation because the husband starts working, earning, and then he will support their family and the children. So it's like overall a happy feeling for the family when the women come forward and then donate their organs to their spouses or these children. Any effect on the women's health? Yeah, generally no much effect on the women's health because we see that before transplantation they are good to donate. Most of the times we see that they might have little overweight. It is known in Indian population because they will be little overweight. So we give a caution to them that see, you are little overweight and then you have to take care of your weight, and then you have to reduce your weight by doing some exercises and then diet modifications. And then we also tell that diabetes is going to be the capital of the world. India is capital of the world. About 17% of the diabetes patients in the world are from India. So the diabetes is increasing more and more, women or men, and then so we suggest that you keep checking your blood sugars and then other tests every 6 months to 1 year. Women donate, we are not ignoring them, so they are going to be regular on follow-up. It's not that you donate and then go back and we don't care about them. So in fact the donors are better than normal individuals because they know that they have donated organs and then they keep coming for regular follow-up, and then every year we check their blood sugars, their urine, their blood pressures, and we warn them that if there is sign of developing diabetes, and we put them onto diabetologists. Probably you require some attention about the diet and medications, and then we really give a lot of importance to who donated the kidney to the other person. It may not be a woman or it may be men or women, but so we take care of the donors whether it's man or woman. So they always will be followed for longer period of times, not like 1 year, 2 years, 5 years, because at least 20 years we tell them that you have to be on regular follow-up and then keep checking your blood sugars and blood pressure, and then some simple kidney tests are enough, and then we take care of them. Not they have kidney disease, because once they donated they shouldn't be developing kidney disease because again they are burden to the family. So we really give that care to the donors. With single kidney, what will be the lifespan? Yeah, generally we have studies done in many parts of the world. About 25 to 30 years we haven't seen any major problems with the donor. After 25 or 30 years they may develop sometime little bit of protein in the urine or blood pressure is going high if they are aged, something like donor about 40 years of age. Then they are 60s, they might develop blood pressure and then some protein in the urine, but otherwise the kidney function remains more or less good for many years. I have seen that studies quoting at 25 to 30 years. And then the oldest donor what we have in India is nearly 45 years. After the donation, she is doing well, and the transplant was done at CMC Vellore. She was the donor, and then she is doing pretty well even after 45 years after donation. Sir, so, how has been the awareness level regarding the kidney donations? Kidney donation, living donation is good. So living donor means from the family. So we have enough awareness. But donations coming from the deceased organs or the brain dead organs still not up to the mark. And then we are trying our best from the various societies of Indian Society of Nephrology, Southern Chapter Nephrology, then Indian Organ Transplantation. We are giving a lot of awareness programs these days to various communities and then public through various, like the people have donated. They have a kind of, we have one donor who donated organ. He has a vehicle with the mention on the titles with the be a donor, something like that, and he keeps going all over and he has traveled abroad with the van, the same van driving all over, not only India, Europe also he traveled. So like that kind of awareness programs we are catching up with more numbers of donations happening with the brain dead donors also these days. The numbers are increasing. So for the last at least I would say that 5 years, so the numbers are gone up, and then people who are brain dead, they are donating organs much more easily rather than earlier. So there was some other kind of myth. They say that okay, this is not good and all. Some communities they were not coming forward, but that is gone now. And then most of the times
they are coming forward to donate the organs and then save many lives. And one donor can save at least 8 lives. 8 lives means heart, liver, kidney, and then cornea, and then pancreas. So like that, one donor can save 8 lives. And then it is really, really a kind of gesture that we should promote. And then because there are a lot more patients waiting for a cadaver transplantation, the waiting period about 3 to 4 years in some hospitals. So we can reduce this by having more and more awareness to donate. Living donation is there about 70 to 80%, but cadaver is about 15 to 20%. But it should go up to 30 to 40%, so that the waiting list, waiting on dialysis will be less, because the dialysis is very expensive. So every year they spend about 3 to 4 lakhs in India. So that can be cut down by doing more and more brain dead organ transplantation. Living transplantation is still about 70 to 80%, still the predominant mode of transplantation in India. But cadaver transplantation really is going to take for the not only the kidney, the liver, heart, lungs. So everything we are transplanting in India. So it is now we are almost equal to Western countries, that we have reached a stage that lung, heart and all, we are doing transplantations in India. I am Dr. Ravi Shankar, Senior Consultant Nephrologist at Manipal Hospital, Whitefield. Thank you. So I am Dr. Sanjeev Rohatgi, and I am the lead consultant of liver transplant at Manipal Hospital, Whitefield. The message I would like to give today is that the pediatric the case which I showed today was the pediatric who required a pediatric patient who required a liver transplant. So what we normally see is that the children are very young, they are not that emotionally attached to the family, and they think that the family thinks that why to invest in getting a transplant for the children. So which is something not right. When we have brought a child in this world, we should take full care of the child. And pediatric liver transplant is very much feasible, and they have a better outcome if we do if they take the liver transplant well, and the initial glitch is overcome, then the long-term life of a pediatric patient is far better than adult patient. So I would say that we should push the pediatric patients for liver transplant, try to help them. There are so many of organizations which help for the pediatric liver transplant. In this case, we raised around 8.5 lakhs by crowdfunding. Then the companies and even the doctors, everybody tried to help in some way or other, and made it successful. यानी कि बच्चों को जो है, आप कह रहे हैं बच्चों का जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो हो सकता है, और इसे बच्चे, हमने सबसे छोटा बच्चा 7 महीने का किया है इधर, और 7 महीने से लेके 73 ईयर ओल्ड तक का भी ट्रांसप्लांट किया है. लेकिन अगर आप देखें तो अगर 7 मंथ्स का बच्चे को अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, है ना. उसकी तो ही हैज़ अ फुल लाइफ टू लिव. तो कौन ट्रांसप्लांट करेगा सर, इनको कौन डोनेट करेगा? Generally same as Dr. Ravi Shankar said, mothers are the ones who come forward, but in the 7-month kid which जो हमने किया है उसमें उसके फादर ने दिया, तो मदर्स का लिवर फैटी था. तो we look into whose liver is good. So it is not that who is donating, we make sure that the liver is good, and either mother or father, uncle, so everybody can donate, because in बच्चों में we need only a very small amount of liver, 150 to 200 grams, and normally people like us will have maybe 1 kg of liver, 1000 to 1200. So 200 grams is not going to make much difference, but it is different from the kidney transplant. Kidney transplant we take 1 kidney out. Here we take only small amount of liver out for children, and in children the cadaveric transplant we have now started splitting.
जो पूरा लिवर होता है तो पूरा लिवर का ज़रूरत नहीं होता है एक एडल्ट को, उसको भी आधे लिवर से काम चल जाता है। तो जो हम कैडावर का जो पूरा लिवर मिलता है, अगर अच्छा क्वालिटी का है तो उसको स्प्लिट करके छोटा सा पोर्शन किसी बच्चे को दे सकते हैं, उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं, और बड़ा वाला जो पोर्शन है वो एक एडल्ट को दे सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड यूके में भी सब ऐसा, यूके में, यूएस में, एवरीबडी इज़ डूइंग दिस। ಇಂದು ಅದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂತ್ರದ ಸೋರಿಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳನೇ ಕಮ್ಮಿ. ಆದರೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ಭಾಳ ಆಗೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ತುಂಬ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಬಯಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಯೂರಿನರಿ ಸರ್ಜರಿ डॉक्टर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अरुणिमा हालदार है। मैं IVF एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की कंसल्टेंट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड में। कल वुमेंस डे है और सभी फ्रेंड्स को, विमेन फ्रेंड्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं उस चीज़ के लिए। और मेरा एक ही मैसेज है आप सबको, अपना ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फर्टिलिटी का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बी मदर्स व्हेन यू आर रेडी टू बी मदर्स। नमस्ते।